sustained high inflation could unhinge inflation expectations and trigger second round effects. The MPC therefore judged that further monetary policy measures are necessary to anchor the inflation expectations. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.9%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. It may be noted in this context that the repo rate still remains below its pre-pandemic level. I would now like to provide an assessment, a more detailed assessment of growth and inflation. And first, I would like to take up growth. According to the provisional estimates released by the National Statistical Office, that is NSO, on May 31st, India's gross domestic product, that is GDP growth, in 21-22 is estimated at 8.7%. This level of real GDP in 21-22 has exceeded the pre-pandemic, that is the 2019-20 level. On the supply side, major categories also surpassed the 2019-20 level. Available information for April and May indicates that the recovery in domestic economic activity remains firm, with growth impulses getting increasingly broad-based. Manufacturing and services purchasing managers indices, that is the PMI, for May point towards further expansion of activity. This is also corroborated by movements in railway freight and port traffic, domestic air traffic, GST collections, steel consumption, cement production, and bank credit. While urban demand is recovering, rural demand is gradually improving. The contact-intensive services related to trade, hotels, and transport have recovered in Q4 of 21-22. Going by the early results of our surveys, capacity utilization in the manufacturing sector increased further to 74.5% in the fourth quarter of 21-22 from 72.4% in Q3 of 21-22. So that is in the last financial year, 21-22, between Q3 and Q4, the capacity utilization in the manufacturing sector increased from 72.4 to 74.5%. Capacity utilization is also likely to increase further in the current financial year. Investment activity is thus expected to strengthen, driven by rising capacity utilization, government's capital expenditure, and deleveraged corporate balance sheets. Improvement in investment activity is also reflected in pickup in demand for bank credit and persisting growth in imports of capital goods. Merchandise exports have remained buoyant with double-digit growth for the 15th successive month in May this year, while high growth of non-oil, non-gold imports is indicative of recovery in domestic demand conditions. Looking ahead, real GDP is expected to broadly evolve on the lines of the April MPC resolution. The forecast of normal southwest monsoon should boost kharif sowing and agricultural output. This will support rural consumption. The rebound in contact-intensive services is expected to sustain urban consumption. Our surveys suggest further improvement in consumer confidence and households' optimism for the outlook a year ahead. Business sentiment remains upbeat according to early results of our surveys. Nevertheless, the negative spillovers from geopolitical tensions, elevated international commodity prices, rising input costs, tightening of global financial conditions, and slowdown in world economy continue to weigh on the outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%,
Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. I would now like to focus a little more on inflation. The CPI headline inflation in April registered a further sharp increase to 7.8%. It was the fourth consecutive month when inflation touched or was above the upper tolerance level of 6%. The surge in headline inflation was seen across all major categories. The global geopolitical situation remains fluid and commodity markets remain on the edge, rendering heightened uncertainty to domestic inflation outlook. Certain positive developments on the prices front in recent weeks may help to ease the acute price pressures to some extent. These would include expectations of a normal southwest monsoon and Kharif agricultural season, the recent supply-side measures taken by the government and the unfolding of their impact, lifting of palm oil export ban by a major supplying country, that is Indonesia, and signs of moderation in global industrial metal price indices. Our quick survey of urban households undertaken after the excise duty cuts of petrol and diesel on May 21st shows a significant moderation in inflation expectations of the urban households. And we notice declines of 190 basis points in their 3-month ahead expectations and 90 basis points in their 1-year ahead expectations. वर्तमान समय आप देखुले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का प्रेसमिट्र सीधा प्रसारण एवं आज घोषणा उपर समस्त नजर थिला जे शक्तिकांत दास कौन घोषणा करुँच विशेषकर रेपो रेट उपर समस्त फोकस थिला तेबे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ी रेपो रेट 4.90% को बढ़िला रेपो रेट एवं यार प्रभाव पड़िबो लोन एवं ईएमआई क्षेत्र में ये रेपो रेट प्रभाव पड़िबो बोली वर्तमान समय ये सूचना रहुची। ब्रेकिंग न्यूज मुद्रास्फीति नहीं घोषणा करुले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एवं निष्पत्ति जहाँ होईची जे 50 बेसिस पॉइंट पर्यंत बढ़ी रेपो रेट 4.90% को बढ़िला रेपो रेट यार प्रभाव लोन एवं ईएमआई उपरे पड़िबो ये वर्तमान समय बड़ प्रेसमिट आपण मैंने देखुले महंगा मुकाबला संपर्क में मेकानिजम हो पारे ए संपर्क में अधिक आलोचना करने त्रिनाथ लेंका अर्थनीति विशारद आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त लेंका सर आपन को स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को। आरबीआई गवर्नर प्रेसमिट उपर सार समस्त नजर थिला जे शक्तिकांत दास मुद्रास्फीति को लेकिन कौन घोषणा करुँच 50 बेसिस पॉइंट पर्यंत रेपो रेट बढ़ी रेपो रेट वृद्धि को आपड़ केमती देखती? नमस्कार। जदि देखा रेपो रेट बर्तमान जो हिसाब से बढ़ी 50 बेसिस पॉइंट आपणकर टोटल उपरे इंटरेस्ट रेट पाखापाखि बढ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़िया माने आपणकर जो आपणकर लेंडिंग और बोरोइंग रेट सेटा आपणकर पूरा बढ़ी जो 50 बेसिस पॉइंट तेणु से हिसाब से जब देखा आप लोग माने जो लोन अच्छे लोन गुड़ा सब महंगा हम आपणकर जो माने आगुरु भी नहीं जो नुआ ने सी भी अधिक रेट देते प्लस जो मैंने आगुरी भी नहीं सी रेट गुड़ा भी बढ़ी कारण जो हाउसिंग लोन कहतु पर्सनल लोन कहतु जहाँ भी सब आप रेट थाए जोटा कि फ्लोटिंग रेट था से रेट भी बर्तमान बढ़ी तेणु बर्तमान जब देखिए आरबीआई को भी बढ़िया निहाती दरकार था कारण इन्फ्लेशन देखिए 7.8% जोटा कि आरबीआई गोटे लिमिट थिला ताको क्रॉस कर जाइथिला एवं बर्तमान भी आरबीआई जहाँ भी कहते जे ये जो रेटा बर्तमान आहरी भी बढ़ियो बोली कारण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बर्तमान जब देखा यूरोप जो क्राइसिस बर्तमान चलता वार सिचुएशन से बर्तमान सब प्रकार प्रभाव पड़ी आपंकर इकोनॉमी उपरे जो रेट बढ़िले निश्चय पुणी कौन हम ना आपंकर इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी आपंकर कंपनी मान लोन भी अधिका रेट नापी पड़ो तेणु से सब दिगरे देखिले आमर रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल जो मैंने ऋण ग्रहित जीवन नौकरी एवं से भी बर्तमान बेसी प्रेशर पड़ो किंतु एथिरे जो मैंने डिपोजिट करेंगे से डिपोजिट रेट बढ़ले से किसी फायदा हम जोटा कि लो रेट डिपोजिट करुले से अधिका रेट डिपोजिट करने पड़ो। आज्ञा तो लेंका क्यों आधार में एभली गोटे निष्पत्ति नि वर्तमान समय जेहेतु देश में महंगाई रोचे दरदाम वृद्धि एवं खुचरा मुद्रास्फीति कोविड समय लोकंर आर्थिक अवस्था भल ना क्यों सब दिग को आधार करके एभली गोटे निष्पत्ति निगला?
देखो ये जो आरबीआई रो पॉलिसी डिपेंड करे आपनकर इन्फ्लेशन उपरे आपनकर इकोनॉमिक सिचुएशन उपरे कारण ये जो प्रति 2 मास रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग बसे तेणु जोटा कि 6 ରୁ 8 तारीख पर्यंत थिला आज तार आउटकम आसिला तेणु ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन नै कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तार पॉलिसी डिसाइड करे जे आगु को केमती रखिवा दरकार कारण पॉलिटिकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैलेंस भी से रखिवा दरकार सो दैट आपनकर इन्फ्लेशन भी मेंटेन हबो प्लस आपनकर इंटरेस्ट रेट भी मेंटेन हबो जदी इन्फ्लेशन बढ़िबो इंटरेस्ट रेट बढ़िया पई से बाध्य हबे तेणु वर्तमान टाइम रे ये वर्तमान किछि दिन लोन एवं ईएमआई ऊपर यार बड़ प्रभाव पड़िबो एवं जहाँ सूचना रही 50 बेसिस पॉइंट पर्यंत रेपो रेट बढ़ी 4.90% रु बढ़ी रेपो रेट तमाम आलोचना कर अनेक अनेक धन्यवाद श्रीयुक्त लेंका त्रिनाथ लेंका बजार विशेषज्ञ आम सहित संपर्क में अधिक आलोचना करुथिले।